Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2371 7106 and 2371 7117, and do not forget to prefix 011, the STD code, if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106। हमारा दूसरा नंबर है 23717117। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है निशित कुमार। The headlines: key domestic share markets decline more than 1.5%. Sensex closes below 57,200 level. Nifty settles near the 17,000 mark. Rupee weakens to all-time low of 81 rupees and 62 paise against the US dollar. And Brent crude prices plunges to hover around $85 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में 1.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 57,200 के स्तर से नीचे और निफ्टी 17,000 के आसपास बंद हुए। रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक की सबसे न्यूनतम स्तर $81.62 पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के आसपास। घरेलू शेयर बाजार की बात की जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी आज 1.5% से अधिक नीचे आ गए। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के बीच दोनों शेयर सूचकांकों में ये सुस्ती आई। सेंसेक्स 57,200 के स्तर से नीचे, जबकि निफ्टी 17,000 के नजदीक बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 954 अंक यानी कि 1.64% लुढ़क कर 57,145 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 311 अंक यानी कि 1.8% गिरकर 17,016 पर आ गया। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.84% और स्मॉल कैप इंडेक्स 3.33% घाटे में रहा। The Sensex and the Nifty today witnessed losses of more than 1.5%. Both indices declined amid fall in the global share markets. The Sensex finished below 57,200 level, while the Nifty settled near the 17,000 mark. The Sensex plunged 954 points or 1.64% to close at 57,145. The Nifty also declined 311 points or 1.80% to end at 17,016. And in the broader market, at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index tumbled 2.84% and the small-cap index ended 3.33% down. In the Sensex SPAC, 6 companies posted gains, while 24 logged losses. Asian Paints and HCL both climbed 1.3% each. Infosys gained 1.1%. While on the other hand, Maruti tumbled 5.5%, Tata Steel plunged 4.2%, ITC declined 3.9%, and Axis Bank ended 3.4% down. And in the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, all sectors logged losses except the IT sector, which posted a gain of 0.1%. Metal sector lost 4.5%. Realty declined 4.3%. Auto sector plunged 3.9%, and utilities and power both fell 3.7% each. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was negative, as shares of 611 companies gained, while 2,980 fell. Shares of 116 companies remained unchanged. And we are joined in by our first caller, Bharat Bhushan from Delhi. Bharat. जी नमस्कार सर। नमस्कार भारत जी।
मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे ये हमारे देश में हर एक क्षेत्र में प्रगति हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरा सर प्रश्न ये है कि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, जो 7 राज्य हैं, तो वहाँ पे पर्यटन के बहुत सारे संभावनाएं हैं, तो उस तरह से वहाँ पे ढांचा विकसित क्यों नहीं हो रहा है जिससे कि हमारे देशी पर्यटक भी वहाँ पे जाएं और विदेश से भी पर्यटक को हम आकर्षित कर पाएं। दूसरा प्रश्न ये है कि जो किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होना अच्छा संकेत है या खराब संकेत है? धन्यवाद जी। जहाँ तक आपका सवाल टूरिज्म को लेकर के है, काफी जगहों पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट जहाँ तक है, चाहे वो रोड्स को लेकर के हो, रेलवेज को लेकर के हो, या पोर्ट्स को लेकर के हो, या एयरपोर्ट्स को लेकर के हो, इन सभी पे ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश ये भी की जा रही है कि जो टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं या जो जगह हैं हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की, उन्हें डेवलप किया जाए और उन्हें रेनोवेट किया जाए या उन्हें उस तरीके से बनाया जाए ताकि जो पर्यटन है वो देश भर में फैले। कोशिश ये भी की जाती है कि जो पर्यटन है उसको सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर के देशों में भी विकसित किया जाए। तो अगर आप प्रमोशंस में देखें, अभी प्रमोशंस में काफी हद तक जगह जगह के हिस्टोरिक जगहों के बारे में बताया भी जाता है और उन्हें प्रमोट भी किया जाता है। जहां तक प्रमोटर्स की स्टेक की बात है, अगर प्रमोटर्स के स्टेक ज्यादा होते हैं तो माना जाता है कि उस कंपनी में ज्यादा कॉन्फिडेंस है और एक जो इन्वेस्टर का विश्वास है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी आईपीओ आता है उसमें प्रमोटर्स की स्टेक रखी जाती है और एक कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स तक भी रखी जाती है ताकि ये कॉन्फिडेंस रहे उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में कि वो कंपनी अच्छा करेगी और उसके अंदर जो उसके निवेशक हैं वो उसके साथ जुड़े रहेंगे। इस बीच दिल्ली से निदुल्ली चावला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ निदुल्ली, आपका प्रश्न पूछिए। Hi, thank you so much, Market Mantra. I always listen to Market Mantra as I am a banker, and whenever I return home, I'm really thankful to Market Mantra and team for giving us so much insight. So I have 2 queries basically. So being a banker, I would like to understand how should we understand the PEG ratio, PEG, profit earning and plus growth ratio, to understand equity markets better and to give our insights to the investors. So, uske bare mein I would like to understand. And the second is that how to relate 10-year GSEC when it comes to debt markets. जी, आपका पहला सवाल है प्रॉफिट अर्निंग और ग्रोथ रेशियो को लेकर के। एक कंपनी का जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट, व्हाटएवर प्रॉफिट इट हैज, द अर्निंग्स इट हैज एंड द ग्रोथ विल डिसाइड द कैपिटल एप्रिसिएशन दैट अ स्टॉक विल एक्चुअली रिसीव इन फ्यूचर. Primarily, again, the PE ratios are usually considered as one of the parameters while investing. Also, when we look at the growth parameters, by many models of dividends, one looks at how much would be the price of the stock depending upon which model of growth one opts for. Again, growth rate is a very important key, plays a key role in defining how much capital appreciation you will receive on the company, either in terms of the capital appreciation or even in terms of the dividend growth. As far as 10-year GSEC is concerned, it is primarily used as the base rate for all debt markets, whereby you then evaluate most of your securities, whether it is corporate bonds or any other bonds, in terms of the yields that one gets on these bonds versus the others. They are also considered as risk-free rates primarily to evaluate all other investments. Well, our next caller is Gurunath from Thane. Gurunath ji. Gurunath ji, can you hear us? जी सर, नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। यमिनी मैम को नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ मैम, मेरा सवाल है मैम, शुक्रवार को भी जो 1000 के ऊपर 1000 के करीब और आज भी 1000 के करीब जो मार्केट में गिरावट देखी गई, तो मैडम ये जो हमारे देश में तो इकोनॉमी के लिए कोई बड़ी घटना तो हुई नहीं, तो ये क्या लॉजिक है इन्वेस्टरों का कि मतलब कहीं से उनको संकेत मिलती है बड़े पैमाने पर बिकवाली हो जाती है, और ये जो मेजर कारण मतलब ये जो वैश्विक जो
बाजारों में जो गिरावट होती है उसका मतलब कि अपने मार्केट पे इतना इम्पैक्ट क्यों होता है? थैंक यू मैम। जी देखिए, हमारी मार्केट जो है सिर्फ एक डोमेस्टिक मार्केट नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी हैं और जिन्हें हम FIIs कहते हैं। हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ने 75 बेसिस पॉइंट अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि FIIs का आउटफ्लोज रहा है। उन्होंने पैसा निकाला है हमारे बाजार से और उसे US वगैरह में निवेश किया है, जिसका सीधा असर हमारे जो मार्केट है उस पे पड़ा है। जो दूसरे वैश्विक कारण हैं वो ये हैं कि जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है और जो वॉर है उसके अंदर एस्केलेशन देखी जा रही है, जहां पे न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचने की भी बात की जा रही है। तीसरा, अगर आप देखें तो ओवरऑल इन्फ्लेशन के फियर्स, जो महंगाई दर है उसका जो असर है वो भी बाजारों पे पड़ रहा है और मंदी के कारण जो US है, यूरोप है, UK है और जो देश हैं वो सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट्स हैं उनमें अभी काफी अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता का माहौल है। Well, yeah, I mean, carrying in that sense, we see that the bond yields in the US is almost at an all-time high, and even the 2-year and 10-year bond yields in US as well as in the Indian markets, as in the Indian system, it is also kind of shooting up. So, do you see? Of course, the FIIs and the FPIs are pulling out of the Indian markets because of the more lucrative things which is happening in the US and other emerging or emerged economies rather. So, do you see this happening as more in a negative way in the coming days? Well, when we look at the bond yields, yes, they do affect the portfolio diversification of the FIIs and the movement towards the countries like US. And one of the key important aspects to remember is that when these outflows take place, there is corrective action that is often seen in the economies from where the outflows is taking place. So we are likely to observe a rate hike here as well in the coming days. The MPC is likely to inform us about its decision on 30th of September, which will give an indication whether RBI would go in for a rate hike or not. Similarly, when we talk about bond yields or when we talk about other parameters, one needs to observe as to how the economy is overall doing. Because there are recessionary fears in the US, people would look for investment opportunities in other parts of the world. True. And when they look for other parts, it is necessary to see which are the bright spots. India trying to take control over inflation, also maintaining a growth rate above 7%, appears to be a bright spot. Its high frequency indicators, also all consumptions and the pre-COVID levels it has reached. Effectively also observed in the taxes that have been collected as GST or the direct taxes are all indicators that the economy is more or less macroeconomically stable. It is also allowing a free float to its rupee, so it is not intervening so much, though there has been a decline in the forex reserves from 600 plus to 543 so far. But it still maintains a very stable economy in terms of prices as well as in terms of reforms and the overall growth rates that are expected. We'll continue with the discussion, but right now it's time to slip into a quick commercial break. Do stay tuned in because we have lots coming up on the other side. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मार्केट मंत्र कार्यक्रम में। अगर आप इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं और अपने हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23717106 23717117। और अब एशियाई बाजारों पर अगर हम नजर डालें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। कारोबार में नकारात्मक माहौल को देखते हुए ये असर दिखा गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3% नीचे लुढ़क गया और जापान के निक्केई 225 में 2.7% की नरमी रही। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक 1.4% नुकसान में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1.2% की गिरावट दर्ज हुई। वहीं हांगकांग के हेंग सेंग में 0.4% का नुकसान देखा गया। यूरोपीय शेयर बाजारों में आज अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान गिरावट का रुख रहा। जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का कैक 0.2% लुढ़क गए। लंदन का FTSE 100 0.1% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। हमने एशियाई शेयर बाजारों पर नजर डाली। मैं सिर्फ चीन का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा कि चीन की जो इकोनॉमी है उसके बारे में तरह तरह से बातें आ रही हैं और ये हम लगातार बाजार में देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जहां पर चीन का सवाल है वहां पे हमने एक स्लो डाउन देखा है कोविड की वजह से भी, और एक चाइनीज इकोनॉमी को थोड़ा आइसोलेट भी किया गया क्योंकि कोविड वहीं से जो है माना गया कि पनपा है और उसकी वजह से बाकी देशों ने चाइना की तरफ जो रुख रखा उसका असर चाइना पे पड़ा है। और जो वैश्विक मंदी है अभी खासतौर पे यूएस, यूरोप और यूके में, उस वैश्विक मंदी के चलते हुए भी चाइना के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो एक उनके डोमेस्टिक कारण है जो कोविड की वजह से है और उनकी अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से पड़ रहा है, और दूसरा जो वैश्विक कारण है उसकी वजह से, क्योंकि चाइना एक ग्लोबल सप्लाई चेन प्रोवाइडर है और उसकी जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है वो ज्यादातर कंट्रीब्यूट कर रही थी चाइना को की ग्रोथ में, और अगर संसार भर में मंदी रहेगी तो वो सीधा चाइना पे असर करेगी। Our next caller is Narottam from Mumbai. Narottam, welcome. Hello. Yeah, Narottam, we can hear you. Yeah, good evening, Market Mantra team. Good evening, Narottam. मेरा सवाल यामिनी जी को है कि ये जो आरबीआई डॉलर का कुछ हेजिंग खुद करते हैं क्या? इतना अपने पास है तो आज डॉलर इतना बढ़ते जा रहा है तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है आरबीआई के पास? जी देखिए, जो रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, जिसका मतलब होता है कि मार्केट डिटरमिन करती है कि क्या एक्सचेंज रेट रहेगा, उसकी डॉलर की कितनी सप्लाई रहती है और कितनी डिमांड रहती है रुपए के मुकाबले में, वो एक्सचेंज रेट डिटरमिन करता है। पर जो डॉलर की सप्लाई है उसको आरबीआई काफी हद तक इंटरवीन कर सकता है पर करता नहीं है। इंटरवेंशन तब लाई जाती है जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो, और उसके लिए हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई खरीदता और बेचता है डॉलर, जिसकी वजह से अगर आप देखें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 640 बिलियन से लेकर के अब जो है 543 पे आ गए हैं। Yeah, Yamini, talking of in the macro terms, rupee plunging almost to 81 point something and dollar gaining strength to almost 20-year high of 113 plus, something like that. It's almost at a 20-year high, the dollar strength. So how difficult it would be for the foreign investors to have that confidence in the Indian story to invest in more and more, because as you know, rupee weakening, dollar gaining strength, it's a negative scenario here. Well, as far as the FIIs are concerned, they would be concerned about the ROIs on their investments. So when we look at the ROIs or the return on their investments, the weakening rupee does allow them to invest more in terms of their overall investments. So they get to buy more, which is there. But what is playing an important role is the interest rate differential, specifically which is between the US markets and the Indian markets. Also, the interest rate the rupee depreciation would affect their outflows, primarily because they will get lesser amount of dollars toward rupee once they outflow. But when they bring about an inflow, it will be an added advantage to them.
For the FIIs to believe in the markets, I believe there are a large number of parameters playing an important role. The sovereign ratings are very stable, which keeps the economy at a better position than its counterparts or its neighboring economies, whether it's Pakistan, Sri Lanka, or China, or Bangladesh, or others. Also, what is important is that the growth rate continues to be good at above 7%. The lowest estimation continues to be at about 7%, so it is likely to be higher. Then the taxes that have been collected on GST, about 1.5 lakh crores, which we are estimating, and the 30% increase in the direct taxes. Also, the pre-pandemic levels at which we have reached and the recoveries we have reached. Also, the way the vaccination was brought into effect and the manner in which the pandemic was handled, both in terms of the credit flows that were made available to people, whether it was farmers, women, MSMEs, or whether it was medicines or food supplies during the period. Also, what puts a better position for India is the amount of social and economic reforms that are very progressive in nature, whether it has been women reforms or for women participation in the GDP, or it has been financial inclusion or digitalization, or it has been disinvestment of a large public sector undertaking like Air India, which was a very difficult task. All these does put forward a very positive growth story for India. Another important aspect of Indian economy is that it has a stable government, which does put forth more confidence for the FIIs for the continued reform pace as well as the growth story which is being built on. The fact that during the inflation pressure also, the both fiscal and monetary measures have been adopted to counter inflation without relaxing on the fiscal prudence is also an important factor which plays a positive role for the Indian economy. और हमारे साथ कोलकाता से अतानु साहा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो अतानु जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, आपका प्रश्न पूछिए। I'm calling, yes, I'm calling from Kolkata, Atanu. My question is, what is market economy and what do you expect from market economy on this scenario? Market economic countries on this scenario. Thank you. When we use the word market economy, we basically try to say that the economy is governed by the market, which means that the resource allocation is actually governed by the market forces of demand and supply. So there is no regulatory body or no central government or a state government or any other government which defines the resource allocation or the prices in the market. Again, the role of the market economy is to actually provide for an invisible hand for resource allocation, which is the most efficient means. And in the present scenario, we are basically seeing that most of us are moving towards a market economy in all sectors, where the market is governing the prices and is defined by the demand and supply in the market. और रुपए पर नजर डालें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी ब्याज दरों में 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी करने के बाद विदेशी निवेशकों के भारतीय पूंजी बाजार से बाहर निकलने के कारण भारतीय रुपए में अतिरिक्त गिरावट आई। रुपया आज डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 63 पैसे कमजोर होकर 81.62 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.45% बढ़कर 2 दशक के सबसे उच्च स्तर 113.75 पर आ गया। वैसे यामिनी, अगर हम अपने देश में देखें तो सरकार ने कई ऐसे उपाय किए हैं, खासतौर पे एक्सेस जो निर्यात हमारे यहाँ से होता था उस पर रोक लगाई ताकि हमारे यहाँ की जो सप्लाई चेन है वो बाधित ना हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब निर्यात होता तभी हमारे पास डॉलर ज्यादा आते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैनेज करना कितना मुश्किल है? जी देखिए, मैनेज करना काफी मुश्किल है क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, खास तौर पे ऑयल के इंपोर्ट्स को लेकर के और डॉलर के जो
स्ट्रेंथ है उसको लेकर के। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी रहे, जिसके लिए जो निर्यात है उनको रोका जाता है, ताकि जो हमारे घरेलू जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए और लोगों को महंगाई का दर जो है वो तंग ना करे और वो अपना सामान खरीद सके। तो इस चीज के लिए जरूरी है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जो घरेलू बाजार है उसमें चीजें आसानी से उपलब्ध हों और वो ठीक दाम पे उपलब्ध हों। जी। नेक्स्ट कॉलर इज SD Khanna फ्रॉम गुरुग्राम। मिस्टर SD Khanna, can you hear us? Yes, I can. Yeah, please go ahead with your question, sir. Should I? Because Yamini is already talking. All right, sir. You need to switch off your radio set or else it would be a bit difficult technically. Put it on the earbud. Yeah, please go ahead. Okay. Should I speak? Yeah, sir, please. Okay. My inquiry is related to the fixed deposit. Okay. I'm a senior citizen for the last 10 years. All and right. My fixed deposit with a particular bank, when matured, they simply sent me a message that we have redone your fixed deposit for next 5 years. All right. So as I had shifted from Delhi, Dwarka to Gurgaon, when I got my account transferred here, I found that, you see, they are giving me interest of only 2.7%. And I said, how is it like this? He said, we only give saving account interest. Now, how do I convert it? Because I'm a senior citizen and also entitled to a higher rate of interest. So the bank said कि आप इसको तोड़ के बना लीजिए. But why should I lose the money because of the inefficiency of the bank? Bank never told me that the fixed deposit is done for 2.7%. Actually, there is a new rule by the RBI that if you don't reinvest your fixed deposit, they are supposed to then give you interest rate on the basis of your saving account. Now, since the bank renewed it for 5 years, that message is very important for you to send it to them and tell them that you had renewed my fixed deposit and hence I should be paid for it. And on the basis of that, I have not re-renewed it. Otherwise, they are supposed to give you, they have to credit the amount in your savings account and then they can give you the savings account interest rate. So you can take that plea that since it had not come to your savings account, you can report it to the bank's ombudsman or the RBI ombudsman and you can write a letter to the chief manager of the bank for the same. Adding 2 points to you, Yamini. When one opens a fixed deposit account, there is a mandate form which goes there, as in whether you want to have the proceeds or you want to renew it further for the same tenor, maybe 5 years, 1 year, or 2 year, or whatever. But as far as I understand, as Mr. Khanna said, that he received a message of that the FD has been renewed for another 5 years. 5 years. So no way is a 5-year tenor can have a 2.7% interest rate. That is even less than a savings kind of interest rate. So probably there is something wrong there. He must... that message is important, and anything on the email that you might have received from the bank is also important for you as evidence. And quickly moving on now, oil prices today fell for a second day on fears of lower fuel demand from an expected global recession sparked by rising worldwide interest rates. The crude also fell as a surging US dollar limits the ability of non-dollar consumers to purchase crude. In the intraday trade, Brent crude was trading at $85.35 per barrel, but the WTI crude prices were at $78.35 per barrel. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना आज 135 रुपए की बढ़त से 49,535 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 20 रुपए टूटकर 56,210 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,651.20 प्रति औंस पर था। चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई $18.80 प्रति औंस पर थी। यामिनी कार्यक्रम में शामिल होने, हमसे चर्चा करने, श्रोताओं के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Yamini. And before we close, a reminder of the headlines once again. Key domestic share markets declined more than 1.5%. Sensex closes below 57,200 level. Nifty settles near the 17,000 mark. Rupee weakens to an all-time low of 81 rupees and 62 paise against the US dollar. And Brent crude plunges to hover around $85 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. See you again. Till then, goodbye. Namaskar.